rotational motion. We understood that in rotational motion, there is one body, arbitrary shaped body. Suppose the arbitrary shape, the complete body, it performs rotational motion. The complete body performs rotational motion about the axis of rotation like this. Always we have to rotate the body in anti-clockwise direction with angular velocity omega. And if suppose I consider each and every minute particles m1, m2, m3, these are the point particles. If I consider these all particles, they move in circular orbit. These all particles, small particles, they perform circular motion. Small particles perform circular motion. Small particles perform circular motion while complete body performs rotational motion. Complete body performs rotational motion. Okay, so this is the thing. This we understood. We understood that the main term is moment of inertia and rotational motion. The moment of inertia, it is nothing but the summation of the product of individual masses and the square of the distance from the axis of rotation, where this is what MIRI square, where I take value 1 to n. So moment of inertia, it is represented by I it is equal to summation of MIRI square, where I take value 1 to n. Again, the same arbitrary shaped body we will consider. This is what an axis of rotation, and the body will move in anti-clockwise direction like this. This is what M1, M2, M3 up to Mn. These are the masses taken into consideration. These are what R1. This is what R2. This is what R3, and the last will be what Rn. So these are the this perpendicular distance from the axis of rotation. So axis of rotation, it is moving in anti-clockwise direction with the angular velocity omega. I is equal to this. You have not written the SI unit. You can write the SI unit. SI unit of I. SI unit of I is what kg meter square. Okay, आपने लिखा नहीं है SI unit. Please write this down. SI unit of moment of inertia is kg meter square. SI unit लिखा of है सर, उस दिन बोला था आपने. okay, ठीक है. So if you have not written, please write it. SI unit is what kg meter square. Okay. Next, we studied the derivation of kinetic energy. So kinetic energy rotational we calculated as half I omega square. Half I omega square ये हमने derive किया. This is what a very simple derivation. Kinetic energy जो translation motion होता है, linear motion होता है, rectilinear motion होता है. Translation motion का normal है half mv square. This is the kinetic energy. Now this m will be replaced by what I, the v will be replaced by what omega, and we will get what kinetic energy rotational as half I omega square. Okay. Next we derive an expression for torque. We calculated torque as tau it is equal to I alpha. This we calculated. What we know is the torque it is equal to force multiplied by perpendicular distance. In this case, we know force multiplied by perpendicular distance, and force is nothing but mass into acceleration, right? So torque force it is equal to mass into acceleration. तो force का एनालॉगस क्वांटिटी क्या होता है? टॉर्क. मास का एनालॉगस क्वांटिटी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ए का एनालॉगस क्वांटिटी क्या होता है? अल्फा. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एनालॉगस क्वांटिटी वी कैलकुलेटेड टॉर्क. Next is we calculated angular momentum. Angular momentum it is written by L, and N formula we derived is what I omega. और यहाँ पे we know linear momentum. The linear momentum it is given by what? Linear momentum it is given by P. P is equal to M into V. So mass का analogous quantity is what I. V का analogous quantity is what? Omega. So this we have done in the previous lecture, and this was very simple derivations. We have concluded this. Okay, I hope you don't have any doubt in this. हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिर से करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो फिर से करेंगे. सो इज देयर एनी डाउट इन दिस? अप टू दिस इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी. चैट में पूछ लो. ठीक है. आशीष आपको कुछ डाउट है? अभिजीत, आदित्य? नहीं ना आशीष, कुछ डाउट है? नहीं.
ओके, हर्ष आपको कुछ डाउट है इसमें? कनक आपको कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, मानसी, डू यू हैव एनी डाउट? Okay, so no doubt. Okay. So if you have any doubt, you can ask me in on the chat. Let us move to the next one. The next question is, the next question is, we have written the question like this: define angular momentum. Define angular momentum. State and prove. State and prove law of conservation of angular momentum. So I'm not writing the I'm not writing the I'm not writing the definition again. I will start with the statement. Yes, anyone? What was the statement of law of conservation of angular momentum? Anyone remembers? आपको If याद हो? no हाँ, external torque is acting on a rotating body, angular momentum is conserved. very good, Amay, very good. Okay, so if no external torque is acting on the body, that means the angular momentum is conserved. Okay. So the statement is, if no external torque acts on the body, angular momentum is conserved. Okay. So if no external torque acts on the body, angular momentum is conserved. So what is given in this case? The given in this case is external torque is zero. It is given that there is no external torque is acting on the body. What is to prove is, angular momentum is conserved. That means angular momentum capital L, it is not constant. This we have to do. Okay, this we have to do. Now what is the logic and what are the various formulas that we require to solve in this? Wait a minute. Sorry for keep you waiting. Actually, there is a medical emergency in my home. My dad is hospitalized. That's why I'm using mobile phone in the lecture. So sorry for the same. So logic that we are going to use in this is L that is going to be constant. So we will be using this dl upon dt, the derivative of L. This is what, since it is what constant.
So derivative of constant is what 0. So this is what dl upon dt is equal to 0. Okay, so we will be using this logic. That derivative we will use the formula of L, that is equal to L bar, it is equal to R bar cross P bar. We will use this formula and we will differentiate this formula with respect to time, and we will get the value, it is what, 0. Okay, and the next thing that we should note is the cross product is not committed to that A bar cross B bar, it is not equal to B bar cross A bar. So जब भी हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, we have to consider this R bar first and B bar in the second position of the cross product. Okay, so we have to note this point. And next is we have to use this du u into v rule, that u dv by dx plus v du by dx. So this formula you should, this all things you should remember, okay, to derive this law of conservation of angular momentum. Okay, तो चाहिए तो आप लिख लो ये लॉजिक, ये लॉजिक आपको याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है. Next we have to prove. These are the four things that you should remember. Okay, so if you have noted the things, I will move to the proof. So the proof is, we know that the formula is L bar, it is equal to R bar cross B bar, and we will differentiate this with respect to time. Differentiating with respect to time, you will get dl by dt of L bar, it is equal to d by dt of R bar cross B bar. Okay, so this is what derivative of LHS will be equal to derivative of RHS. Okay, differentiating with respect to time. So I hope you have written the logic. I'm going to raise this things. लिख लिया ना सबने, किसने लिखा नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, so this is what dl bar divided by dt, and on this side we will be using u into v rule, because r bar is a radius vector. It depends on time, it changes its position with respect to time. We have seen in circular motion that r bar depends on time. Also, this is what linear momentum p bar. P bar is equal to m into v bar, and v is the velocity which is depending on time. Okay, so both are depending on time, so we will be applying u into v rule. लेकिन हमेशा cross product में r bar should be in the first position, p bar should be in the second position. So suppose पहले r bar को बाहर निकालते हैं, we are multiplying the derivative of v bar and added with. Next is p bar. If we have to take outside, but p bar पहले नहीं लिख सकते हम लोग. We will write dr bar by dt cross p bar. Okay, so same thing. So we have to use u into v rule, since v by dx of u into v, it is what u dv by dx plus v du by dx. Okay, so this will be equal to r bar cross E, it is nothing but mass into velocity, so we can write derivative of d by dt of mass into velocity plus derivative of r bar with respect to t, it is what v bar. So this is what v bar, because you can see the unit, इसका unit क्या मीटर, टाइम का unit क्या सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका होता है velocity का, so we will write velocity multiplied by this is what p bar. Okay, so this is what multiplied by p bar. So what is the reason? So p bar नहीं लिखेंगे हम लोग, what we have to write is m into v, because p it is what, m into v bar. Okay, so what is the reason? We can write the reason as p bar, it is equal to m into v bar, and also the d by dt of r bar, it is equal to v bar. This is the reason. Next is the mass, that is what, constant. So mass you can take outside. So mass, if I take outside of derivative r bar cross m into dv bar by dt, okay, plus mass again I can take outside, this is what v bar cross v bar. So this is nothing but acceleration, r bar cross m into derivative of rate of change of velocity with respect to time is acceleration. So this is what acceleration, plus this is what m into this is what 0 bar, because the cross product of same vector, it is what 0.
So since dv bar by dt it is equal to a bar and the cross product of same vector v bar cross v bar it is equal to 0 bar. 0 bar we have to write, okay? Why? Because this was a vector product. इसका आंसर क्या था? वेक्टर क्वांटिटी. So 0 bar you should write. तो नेक्स्ट टर्म में ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट और आप नहीं लिखोगे नेक्स्ट पार्ट में. सो दिस इज नथिंग बट r bar cross mass into acceleration it is what force. This is the value of dl bar by dt. Now what next you will get this force multiplied by perpendicular distance and force multiplied by perpendicular distance क्या है? Torque. And this we can write it as what? Torque external. But this is given that external torque it is what? 0. This is given that external torque is 0. So you can write it as what? 0 bar. So इसका मतलब क्या? Therefore derivative of L it is what? 0 bar. Therefore L is constant with respect to time. L is constant with respect to time. And is constant with respect to time. Okay, so this is the thing. So I hope you understood this, right? किसी को कुछ डाउट है ये डेरिवेशन में? पिछले लेक्चर में आपने ये डेरिवेशन लिख लिया था, ठीक है? आशीष कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं. ओके. हर्ष कुछ डाउट है? प्राची कुछ डाउट है आपको? नहीं सर. विनय कंसे कुछ डाउट है? हार्दिक तो बस लेक्चर में आए हैं और वो सुन भी नहीं रहे हमें. नहीं सर. बस अपना लेक्चर में वो प्रेजेंट रहना है उसको बस. हार्दिक को उसने अपना ये माइक भी एक्टिव नहीं किया है, ऑडियो भी एक्टिव नहीं किया है, कुछ स्पीकर भी एक्टिव नहीं है. कोई बात नहीं. ये सारा डू यू हैव एनी डाउट? Yes, so how come dr by dt is v bar? Yeah, so you can see the unit, okay? तो r बार का यूनिट क्या होता है? r बार का यूनिट होता है मीटर. r बार का यूनिट क्या होता है? मीटर. एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? दैट्स व्हाट डिवाइडेड बाय टाइम. r डिवाइडेड बाय टाइम है ना? r डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. सो दिस व्हाट मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड किसका यूनिट था? वेलोसिटी का. सो वी कैन राइट इट एज व्हाट? वेलोसिटी. रेडियस वेक्टर का वेलोसिटी. So this is the velocity of radius vector. V bar is the velocity of radius vector because the unit is what? Meter per second. Unit is what? Meter per second. Yes, sir, got it. Okay, so let us move to the next part. So this will be the very important part of your rotational motion. अगर आपने ये नहीं समझा तो इसका मतलब आपको rotational motion नहीं आएगा बिल्कुल भी. ठीक है? So next is the very important part of the rotational. This is the very important part of the rotational motion. Okay? आदित्य अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? आदित्य सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आदित्य को सुनाई नहीं दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है. ओके ओके ठीक है. Okay, so this is the next part. The very important part of rotational motion is the next question. State and prove law of perpendicular axis theorem. State and prove law of perpendicular axis theorem. State and prove law of perpendicular axis theorem. So there are two laws, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. State and prove, you can say state and prove perpendicular axis theorem, not law. State and prove perpendicular axis theorem. So देखो जो कुछ भी स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट जो भी होता है वो आपको टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट है वो ही लिखना रहता है. ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट का 1 मार्क आता है सीधा और वो स्टेटमेंट डिक्टो होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक से मैच होना चाहिए. ठीक है ना? स्टेटमेंट
तो स्टेटमेंट यू हैव टू राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है. देन वी विल read the statement from the textbook as well. So the statement is the perpendicular axis theorem states that yeah, perpendicular axis theorem. If suppose this is what an arbitrary shaped body. This is what an arbitrary shaped body. Okay, and to this arbitrary shaped body, what we are having is perpendicular axis. So axis मतलब कौन सी axis होती है? एक x axis होती है, एक y axis होती है, और एक z axis होती है, right? Like this, the axis system is there. So यहाँ पर भी यहाँ पे तीन axis होंगे, x axis, y axis and z axis. But जो z axis है, that z axis will be perpendicular to the plane. So the z axis will be perpendicular to the plane like this. So this will be called as z axis, iz. Okay, and इसको ही perpendicular there will be an x axis like this. This will be what an x axis. This will be called as ix, and the another one will be iy. These are what x, y, z. These are the three axes. Moment of inertia about what is iz? Moment of inertia about z axis. What is ix? Moment of inertia about x axis. What is iy? Moment of inertia about y axis. These three are mutually perpendicular axes. These three are मतलब z is perpendicular to x, x is perpendicular to y, also y is perpendicular to z. So these three are mutually perpendicular axes. So this is what state and prove law of this perpendicular axis theorem. The complete mass of the body it is what m, but we will consider this very small particle, this is what dm. So dm is the very small mass taken into consideration. Okay, in this case. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि कोई भी बॉडी होने दो, बट क्या होना चाहिए? प्लेन लैमिना. क्या होना चाहिए? प्लेन लैमिना. So प्लेन लैमिना इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस. प्लेन लैमिना मतलब क्या? प्लेन लैमिना मतलब एकदम प्लेन सरफेस. इट शुड बी अ प्लेन सरफेस लाइक दिस. ओके, let it be the surface is like this. We should not consider the surface like this. We should consider the plane surface. Okay, हमें इसका ये वाला surface consider करना था, plane surface. Okay, red वाला is what. So this is called as what? Plane lamina. So moment of inertia about an axis. So it is moment of inertia about an axis perpendicular to plane lamina. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना मतलब क्या? कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना. जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस. कौन सा एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना? ऑब्वियसली जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना, है ना? जेड एक्सिस इट इज परपेंडिकुलर लाइक दिस. दिस इज व्हाट जेड एक्सिस. दिस इज व्हाट जेड एक्सिस, आई जेड. और ये जो प्लेन है, एक्चुअली ये प्लेन कैसा है? दिस प्लेन इट इज, अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो प्लेन इट इज लाइक दिस. सपोज आर्बिट्री शेप है, सो द प्लेन इज लाइक दिस, राइट? अगर इसको हम ये टॉप व्यू है इसका. दिस इज व्हाट अ टॉप व्यू. एंड if suppose I consider the two axes, x axis and y axis, these two axes are in the plane of the lamina. These two axes are in the plane of the lamina like this. Okay, so this is what ix and this is what iy. और iz स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, आपके पास में आ रहा है, राइट ना? iz it is perpendicular to the screen. So your screen it is what a plane lamina, right? So what is the statement? Start किया है हमने statement लिखना. Moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina. इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी बात हो गई है? iz की. तो इसका मतलब iz इसकी बात हो गई है. Okay, so moment of inertia about an axis perpendicular to plane lamina is equal to means this iz it is equal to the addition of or the summation of moment of inertia about two mutually perpendicular axes.
lying in the plane of laminar body and lying in the plane of laminar body and concurrent with the perpendicular axis. So the first statement was very simple. Moment of inertia about an axis perpendicular to the plane laminar. So for moment of inertia about an axis perpendicular to the plane laminar, it is what Iz is equal to. So this value it is equal to. So this is equal to, right? It is equal to the summation of, summation मतलब addition, right? Summation मतलब addition ऐसा है क्योंकि दो ही वैल्यू है तो दो वैल्यू को हम लोग सिग्मा नहीं लिखेंगे we will write this as what plus sign of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. अभी दो एक्सिस है जो आपस में परपेंडिकुलर है तो कौन सी एक्सिस है वो जो आपस में परपेंडिकुलर है IX और IY, right? So it is summation of mutually perpendicular axis lying in the plane of laminar body. So this is what the laminar body और IX और IY दोनों laminar body के plane में है. IX और IY आपके स्क्रीन पर है बस IZ ही परपेंडिकुलर है समझ में आ रहा है ना lying in the plane of laminar body and concurrent मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाए एक ही पॉइंट पे मिल जाए with the perpendicular axis मतलब एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए ये तीनों के तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए तो अगर ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे मिल जाए so we can write perpendicular axis there. Okay, suppose if I say if I give you example this is what the value of IZ1 ये तो दूसरा एक्सिस है IZ1 so I cannot write this IZ1 it is equal to IX plus IY ये मैं नहीं लिख सकता this is not correct क्यों क्योंकि देखो अभी सब बोलोगे सर IZ तो इसके परपेंडिकुलर है IX और IY भी परपेंडिकुलर है but the thing is they are not concurrent okay तो ये दोनों सबके सब तीनों एक्सिस it should meet at a single point okay so this is the statement of perpendicular axis theorem. So let us see what is the statement from the textbook और textbook का statement आपको लिखना है. I hope you understood this. इसमें कुछ doubt है? You take a screenshot if you don't have any doubt. You can take a screenshot. Okay, so I am erasing all these things and we are moving to the textbook. So this is the statement. And these are the derivations. So this is the actual statement. It states that. Okay. Okay. So new syllabus में आपका statement easy कर दिया है लोग ने क्या बात है देखो क्या है the moment of inertia IZ okay ये अभी लिख दिया उन्होंने the moment of inertia IZ of a laminar object तो मेरे ख्याल से आपको पता है अभी laminar क्या होता है right ना laminar मतलब plane surface हाँ so the moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane that means we are talking about IZ okay perpendicular to its plane that means we are talking about IZ so यहाँ मतलब we are talking about IZ the moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane is is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes that means what x and y in its plane so matlab in the plane of laminar body in its plane matlab in the plane of laminar body and all the three axes being concurrent. So all the three axes should meet at a single point. Okay. So all the three axes should meet at a single point. So what you have to do is you have to write the question. क्या लिखोगे question? State and prove perpendicular axis theorem. The question is
state and prove परपेंडिकुलर एक्सिस पे रहेंगे। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट लिखो, ये वाला, you write the statement, heading लिखो statement, ऐसे heading लिखो statement और फिर statement लिखो, कंप्लीट करो फटाफट। So I hope you have completed writing these things. Complete it fast. You have written the statement. I will. Okay. So you have written the statement, right? After that, you have to write mathematically. It can be expressed as. It can be expressed as. But mathematically it can be expressed as Iz it is equal to Ix plus Iy. Iz it is equal to Ix plus Iy. ठीक है? And हाँ अभी रुक जाओ, पहले पूरा कंप्लीट करना दो फिर लिखो. Then next we will write the proof. Okay, that means we have to prove this. Iz is equal to Ix plus Iy. अभी तक हमने I का फॉर्मूला देखा that I it is equal to summation of mi Ri square. Where I take value 1 to n. So this is what the theoretical formula for getting the value of I. This is what a theoretical formula. Why theoretical formula for getting the value of I? For example, अगर आपके पास में आपका एक notebook है, okay, so this is what a notebook. नोटबुक के बीचों बीच आप उसको एक उंगली पे घुमा रहे हो, उसको नोटबुक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि आपको नोटबुक को छोटे छोटे हिस्सों में पहले तो आपको इसको तोड़ देना है छोटे छोटे हिस्सों में. फिर वो सब छोटे छोटे हिस्सों का आपको क्या फाइंड करना है? मास कैलकुलेट करना है और फिर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. वो मासेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो बुक में लिखने के लिए, पेन से लिखने के लिए तो ये बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली अगर आप करने जाओ सो दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. ओके, so the thing is you cannot use this formula for
getting the value of moment of inertia. So what are the practical formulas? So there are two practical formulas for getting the value of moment of inertia. The first is I it is equal to integration of r square with respect to L. I it is equal to integration of r square with respect to L. So ये formula we will be using in perpendicular and parallel axis theorem. Perpendicular और parallel axis theorem में हम लोग ये formula use करेंगे, ठीक है? I it is equal to integration of r square into dl, ठीक है? और एक फॉर्मूला है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई, बट वो जब भी आएगा तभी देखेंगे. अभी परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम चल रहा है, तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो सेम फॉर्मूला देखो, आर स्क्वायर इज देयर, सो यहाँ पर भी क्या है, आर स्क्वायर, राइट. वन मास इज देयर, तो यहाँ पे भी क्या है, मास है, dl. Summation, it is what summation मतलब discrete particles. Okay, summation मतलब discrete particles. Integration मतलब addition of all the things, that is the complete body. Okay, so we'll consider the complete body by using integration operator, right? So क्या क्या नोट करना है, इन शॉर्ट आपको नोट करना है that moment of inertia is given by this formula where r is the perpendicular distance from the axis. ये एक्सिस है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r. Okay. So proof, what we have to prove is consider an arbitrary shape rigid body. Consider an arbitrary shape rigid body. Of mass capital L as shown below. So we have to draw the arbitrary shape rigid body, जो हमेशा हम बॉडी बनाते हैं arbitrary shape like this. This is the capital N is the mass of the body. Now this is about perpendicular axis theorem. तो यहाँ पे आपके पास में तीन एक्सिस रहेंगे. पहला वाला जो perpendicular axis है, इसको आप नाम दोगे IZ. ये वाले एक्सिस का नाम सपोज यू हैव रिटन IX. ये वाले एक्सिस का नाम यू हैव रिटन IY. So consider arbitrary shape body of mass capital N as shown below. So this is the diagram. Then let dl be the small mass taken into consideration. So dn is the small mass taken into consideration. यहाँ पे आपको dn consider करना है, small mass. अगर आप ऐड करोगे ये dm सबका, so you will get capital N. ओके, तो यहाँ पे पहले वाले केस में m1, m2, m3 ये अलग अलग मासेस हो सकते थे, बट ये वाले केस में एक ही मास है dm. m1, m2, m3 ऐसा अलग अलग, ये 1 ग्राम, ये 2 ग्राम, ये 1.5 ग्राम, ऐसे पॉसिबल था. बट यहाँ पे आपको सब इक्वल मासेस कंसीडर करना है. dm मतलब इक्वल मासेस. So let dl be the small mass taken into consideration, and इसका perpendicular distance क्या रहेगा? Z axis से suppose the perpendicular distance is what, r. अभी there will be a perpendicular distance from the x axis. The perpendicular यहाँ पे बनाएंगे, this is what perpendicular distance, and यहाँ पे perpendicular बनाएंगे, so this is what the perpendicular distance. Now this is what x axis. X axis पे the length is what, x. If this is what x, then this will be x. This is what y axis. Y axis पे distance it is what y. So if that is y, this will be what y, right? अभी and r, x and y be the perpendicular distance from axis of rotation. If you see,
R के लिए क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन IZ, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन IZ, कॉमा x के लिए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस IY, y है, देखो x के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है y, अगर मैं देखूं ऐसा x है तो y ऐसा है, राइट ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज व्हाट x के लिए y, तो x के लिए इट इज व्हाट IY एंड y के लिए इट इज व्हाट IX रिस्पेक्टिव। देखो यहाँ पे y है ऐसा डायग्राम में, और दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, ओके, सो y के लिए what is the axis IX, okay, so we know is the formula of IX IY IZ, okay, what we know is the formula, therefore we know that मेरे को सब पता है, क्या पता है IZ का फॉर्मूला, IZ इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस IZ का r है, r स्क्वायर इनटू dl, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IY, IY it is equal to integration of x square with respect to n, and IX if I say IX it is equal to integration of y square with respect to n, getting or not, तो याद रख तो चलो कंसिडरेशन और ये सब था, then we will mark this points, this is what O, this is what P, suppose this is A, this is B, so you consider any triangle, consider triangle, कौन सा करना है बोलो, OAP कर लेते हैं, so OAP, consider triangle OAP, now if you by Pythagoras theorem, if you apply Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, what you will get is OP square it is equal to OA square plus AP square. Then you substitute the values. What is the value? OP का value कितना है R. So you will write R square it is equal to OA का value कितना है Y. So Y square plus AP का value कितना है X. So this will be X square. Now if you see in this, you have to multiply that by dm. So what you can write is multiply both the sides by dm. So if you multiply both the sides by dm, what you will get R square dm it is equal to Y square dm plus X square dm, right? Then you integrate, because integration है ना, so उसके बाद में लिखोगे on integrating. On integrating, what you will get? On integrating, you will get integration of R square dm it is equal to integration of Y square dm plus integration of X square dm. But ये तो this is what, suppose equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. So you can write from 1, 2 and 3 Ix Iz is equal to Ix plus Iy. So from 1, 2 and 3, what you will get? Iz, from that you get Iz it is equal to Ix plus Iy, right? So from 1 to m you are getting this, और उसके बाद में प्रूव कर लिया हमने यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया, और अपना फेवरेट वर्ड hence proof. After that your favorite word hence proof, right? So is there any doubt in this derivation? This is very simple derivation according to me. अगर आपको कुछ doubt है तो please you ask. Yes Ashish, any doubt? Simple. No. No doubt, no? Good. Okay, you start writing this. If you have any doubt, please chat with me.
So I hope majority of the students they have completed writing. Those who are still writing, they can take a screenshot. We are moving to the next question. Okay, so all have completed. Remember one thing that if suppose this is the shape, what is the difference between these two? The difference between these two is one is disk, another is what ring. So this is what a ring, and this is what disk. The both are having the same mass, capital M. The moment of inertia of ring, it is what greater than moment of inertia of disk. क्यों? क्योंकि जितने भी मासेस है दोनों का मासेस m है. एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये बीच में से पास होता है रिंग के और ये बीच में से पास होता है डिस्क के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो ये है थ्योरेटिकल फॉर्मूला समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर, where I take value 1 to n. प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी देखो तो there is no difference that there is what r square is there is what dm is there is what integration. The thing is जितने भी मासेस है m1 m2 m3 m4 mn टोटल इज व्हाट m, सबके सब मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है रिंग के, सबके सब मैक्सिमम डिस्टेंस पे. बट डिस्क की बात करें यहाँ पर भी m1 है, यहाँ पे m2 m3 m4 m5 लाइक दिस mn, दिस आर व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी है, रिम पर भी है, बट यहाँ पर भी प्रेजेंट है, कम से कम डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट है. तो इसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है. रिमेंबर moment of inertia depends on a very important part. It depends on distribution of mass. It depends on distribution of mass. अगर distribution of mass same है, moment of inertia same है. For example, if I consider a sphere, So what it is a sphere? So this is what a sphere. Okay. So ये sphere में अगर मैं ये वाला एक्सिस की बात करूं, लाइक दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला एक्सिस की बात करूं, so this will be called as what, I z. What this will be called as? This will be called as I x. What this will be called as? This axis will be called as I y, suppose. So अभी हमने देखा that I z it is equal to I x plus I y, बराबर ना? और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है. क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड they are concurrent as well. They are passing through the same point, right now. So this is what getting satisfied. This is what getting satisfied. Okay, this is getting satisfied. But ये वाले केस में Iz it is equal to Ix, it is equal to Iy. Iz, Iy, Ix सब सेम है. क्यों तीनों सेम है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज व्हाट सेम. ओके, आप अपना रबर का बॉल कंसीडर करो जो आप क्रिकेट में खेलते हो, राइट? रबर का बॉल अगर आप कंसीडर करोगे, अगर आप उसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कट करोगे, आपको दो हिस्से मिलेंगे. आप उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करोगे, आपको दो हिस्से मिलेंगे. आप उसको ये वाले एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करोगे, आपको दो हिस्से मिलेंगे. ये जो दो हिस्से मिल रहे हैं आपको, ये दोनों हिस्से क्या है? सेम है, राइट ना? ये दोनों हिस्से क्या है? सेम है. तो सेम है इसका मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग. If distribution of mass is not changing, then moment of inertia will remain same. Moment of inertia will remain same. Okay? So जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Then we will move to the next question, that is the parallel axis theorem. Okay. So I hope you have taken the screenshot. I am erasing all these things. Before learning the parallel axis theorem, what you should we should be known with center of mass. So what is the center of mass? The point where, what it is, a point.
The point where center of mass is a point, center of gravity is again a point. So point where whole mass of body is supposed to be concentrated. Is known as center of mass. Center of mass is there in the rotational motion. Center of gravity भी पढ़ लो अभी, center of mass पढ़ रहे हो तो center of gravity वैसे तो है नहीं, but पढ़ लो. सिर्फ ये मास की जगह पे क्या आ जाएगा, वेट. मास की जगह पे क्या आ जाएगा, वेट. So the point where whole weight of the body is supposed to be concentrated, it is called the center of gravity. Or it is called the center of gravity. This is what the center of mass. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फंडा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पॉइंट मासेस चाहिए थे, है ना. पॉइंट मासेस m1 m2 m3 m4 m2 mn, ऐसे पॉइंट मासेस चाहिए और सबको मिला के द कंप्लीट मास बनता था कैपिटल M. तो बात ऐसी है कि आप एक काम करो, आप सेंटर ऑफ मास ही कंसीडर कर लो ना. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट होता है. सेंटर ऑफ मास इट इज नॉट वन पॉइंट, जहाँ पे सबका सब वेट इट इज मास इट इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो अगर ये पॉइंट का ही मास अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M. तो आपको दूसरे मासेस कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, दूसरे पॉइंट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कंसीडर ओनली वन पॉइंट. सो दिस इज द फंडा that of center of mass, that only one point, एक पॉइंट कंसीडर करो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. समझ में आई बात, समझ में आई सबको. सेंटर ऑफ मास का क्या फंडा है, सेंटर ऑफ मास का फंडा है दैट यू शुड कंसीडर ओनली वन पॉइंट and you will get the complete moment of inertia. Okay, you take a screenshot, then we will move to the next part. Okay, so I hope you have taken the screenshot. I am moving to the next part. The next question is state and prove parallel axis theorem. State and prove parallel axis theorem. Now obviously ये parallel लिखा है तो obviously दो एक्सिस क्या रहेंगे, parallel होंगे. जैसे कि सपोज ये आर्बिट्री शेप बॉडी है, ठीक है ना, इसका मास कितना है, कैपिटल है. ये एक एक्सिस है जिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो सपोज ये एक्सिस है I0 और I0 का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि चलो ठीक है, आपको IZ का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, आप एक एक्सिस कंसीडर करो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती हो और वो पैरेलल हो I0 से. ठीक है. सो अब पहली चीज तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता रहना चाहिए. तो सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है इसका, दिस इज व्हाट C, द C इज व्हाट सेंटर ऑफ मास. We have to consider an axis which is parallel to I0. और अगर सपोज ये एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है तो ये एक्सिस भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए. दिस इज व्हाट IC. IC इट इज व्हाट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आपको I0 कैलकुलेट करना है. तो I0 इट इज इक्वल टू IC प्लस द मास ऑफ द बॉडी एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज सपोज h. ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट h. सो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इट इज इक्वल टू IC प्लस NH स्क्वायर. I0 इट इज इक्वल टू IC प्लस NH स्क्वायर. दिस इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो क्या रह सकता है आपके हिसाब से स्टेटमेंट. ऑब्वियसली हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में है वो ही लिखेंगे, बट दे विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. सो वी विल राइट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. Parallel axis theorem states that what is I0? I0 कोई भी एक्सिस है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, the
the moment of inertia about any axis. Moment of inertia about any axis, that means we are talking about I0. I0 is any axis, कोई भी axis है जिस पे आपको moment of inertia calculate करना है, is equal to. So this is what it is equal to. This sign it is equal to. It is equal to what? The sum of. The sum of. किसका किसका sum है? IC. What is IC? Moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass. So what is IC? IC it is what? Moment of inertia about a parallel axis passing to the center of mass. IC it is passing to the center of mass, and IC it is parallel to what? I0. IC it is parallel to I0, right? So it is what? Summation of moment of inertia about a parallel axis passing to the center of mass, right? And yeah, and there is a product, and product matlab multiply, and the product of what? Mass of the body product of mass of the body and what? H square. H square matlab square of the perpendicular distance from the axis of rotation. And square of the perpendicular distance from the axis of rotation, right? So this is what the value of I0. Mathematically, this statement can be written as what? I0 it is equal to IC plus MH square, right? So I hope you understood this. What is the statement? Parallel axis theorem states that moment of inertia about any axis, okay, is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing to the center of mass and the product of mass of the body and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. So let us check what is there in the textbook. You can take a screenshot, okay? I am moving to the textbook now. So let us move to the textbook. So this is what a parallel axis is. So here is the statement of parallel axis theorem. Now see, what is the statement? The moment of inertia I0, okay, of an object about any axis. So this is what any axis. What it is equal to is the sum of its moment of inertia about an axis passing parallel to the given axis, and it is what? Passing to the center of mass. Okay, that means what? IC and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes. That is what? MH square. Okay, getting or not? So what we have to write? We have to write the question first. What is the question? State and prove parallel axis theorem. The question is state and prove parallel axis theorem, and you write the statement. Heading to statement and write this statement fast.
this is the simple statement. I hope you have written right. Have you completed? Yes, sir, completed. Okay, so I'm moving to the. If we have completed this, then I will move to the next screen. So again, what you can say is mathematically it can be expressed as, right? It can be expressed as mathematically it can be expressed as Iz it is equal to sorry, we are having a parallel oxygen, right? So mathematically it can be expressed as I0 it is equal to IC plus MH square. Okay, then we will write proof. So again the same thing, consider an arbitrary shape rigid body of mass capital M as shown below. So this is what an arbitrary shape rigid body. This is mass capital M. The axis here it is like this. This is the axis. The axis here it is what I0. We have to consider the center of mass. So suppose this is what O, because the IO is there, so we can name it as what O. Or यहाँ पे the name it is what IC. So we can name it as what C because this is what a center of mass one. Okay. Or what next we should consider is we should consider a very small mass dm. So this is a very small mass dm taken into consideration such that the distance of IO from the dm it is what r suppose, and the distance of this is what r0. Suppose the distance here it is what r0 and the distance here it is what r. I can join these two parts and we know that the perpendicular distance between the two axes it is what h, right? तो ये तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, मुझे 90 डिग्री वाला एंगल चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन, I can extend this line and these are what perpendicular now. These are perpendicular and suppose this is what point D. This is what point D. Okay. So this is what point D. This is what O. हमने हमेशा P पे कंसिडर किया है, पॉइंट P पे dm कंसिडर किया है, ठीक है ना. सो क्या लिखूं मैं आगे अभी यहाँ पे I0 and IC are parallel axes separated by distance h, separated by distance h. If it is moving in anti-clockwise direction with angular velocity omega, I0, IC भी same direction में move करना चाहिए anti-clockwise direction and with angular velocity omega again same. Next is dm. Let dm be the small mass taken into consideration. Here we know that what we know is the formula of I0 and IC. We know that what we know is I0. What is I0? I0 it is equal to integration of what is the perpendicular distance from dm? The perpendicular distance for I0 it is what r. So we can write it as what r square into dm, right? And what is the value of IC? IC it is equal to integration of what is the perpendicular distance of IC? RO. So it is RO square into dm, right? I0 it is equal to integration of r square into dm and IC it is equal to integration of r0 square into dm. ठीक है?
Now we will consider the bigger triangle OPD. Consider triangle. Consider triangle OPD, the bigger triangle. So by Pythagoras theorem, BPT का full form आपको पता है ना? आपके पास में बहुत सारे full form है, but the actual full form is by Pythagoras theorem. Okay, BPT. Next is by BPT, what you can get is OP square. It is equal to OD square plus PD square, right? So what OP square can be written as? OP square can be written as this. OD it can be written as OC plus CD because OC we know it is what H. So OD के जगह पे you can write OC plus CD, the whole square plus what PD square. Okay, you can apply A plus B the whole square formula. So what we are getting OC square plus 2OC into CD plus CD square plus PD square. CD square plus PD square. Here it is what? CD square plus PD square. So what is CD square plus PD square? If you say, if you consider the small triangle PCD, you can get CD square plus PD square as what? 50 square. So this is equal to OC square plus 2OC CD plus इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? PC square you can write. Q, since in triangle, the smaller triangle PCD, PC square it is equal to CD square plus PD square, right? So this will. Next, what you got is OP square it is equal to OC square plus 2OC into CD plus PC square. Now you substitute the values whatever you know. OP square का value क्या है? OP square का value है R square. So R square. What is the value of OC square? OC square is what? H square. And CD का कोई value नहीं है. तो CD suppose I am writing it as what? X. So plus 2. OC का value कितना? OC का value है H और CD का value suppose X plus PC square. So PC square it is what? R0 square. ठीक है? The next step is to multiply both the sides by dn. So multiplying by dn. Multiplying by dn. What you will get is R square into dn. It is equal to H square into dn plus 2HX into dn plus R0 square into dn. So this is what multiplying by dn. Next is on integrating. On integrating, what you will get? On integrating, you will get integration of R square into dn. It is equal to integration of H square into dn plus integration of 2HX into dn plus integration of R0 square into dn. Okay. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. What values you know is integration of R square into dn, that is what I0. तो ये पता है आपको, this is what I0. I0 it is equal to. Now what is integration of H square into dn? Integration of H square into dn. Now H is what? Constant. बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के. H square integration of 1 with respect to n. What is integration of x with 1 with respect to x? पता है 1 with respect to x क्या रहता है? Integration of 1 with respect to x. x होता है ना ये? अरे याद है क्या नहीं? Integration of 1 क्या होता है? x होता है. Because it is with respect to x. अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो विद रिस्पेक्ट टू n है तो क्या हो जाएगा n. तो कंप्लीट मास इट इज व्हाट? कैपिटल N. सो यू कैन राइट इट इज व्हाट? कैपिटल N H स्क्वायर, राइट. सो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू n है उसको क्या लिख सकते हैं? N H स्क्वायर. ओके. एंड प्लस ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू क्या है? R0 स्क्वायर dn. सो इट इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ R0 स्क्वायर dn इट इज व्हाट? IC. तो यहाँ पे लिख दोगे प्लस IC. नाउ ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ 2HX dn ये नहीं चाहिए हमें.
So अगर नहीं चाहिए, so we can write it as what? 0. This is what? 0. This part it is what? 0. Why it is 0? Because देखो 2h आप बाहर निकाल सकते हो. Integration of x with respect to n. So x क्या है? X है distance between point D and what? C. C क्या होता है? Center of mass होता है. C क्या होता है? Center of mass. Center of mass अगर कंसिडर किया आपने, तो आपने कंप्लीट मास कंसिडर कर लिया ना, कैपिटल M. सेंटर ऑफ मास पे मास कितना होता है? कैपिटल M. और फिर भी आप इसको dm से कंसिडर कर रहे हो, dm एक्स्ट्रा कंसिडर कर रहे हो, तो dm कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x dm इट इज व्हाट? 0. ओके, क्या लिखोगे रीजन? मोमेंट्स अबाउट center of mass is 0. Moments about center of mass is 0. Okay, moments मतलब moment of inertia. Moment of inertia about center of mass is what? 0. तो ये सब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो ये फर्स्ट वाला टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर. केजी मीटर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये भी क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये भी क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज व्हाट? 0. क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से. इसलिए उसका वैल्यू कितना होता है? 0. तो ये मिल गया आपको. I0 इट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर चाहिए था, ये मिल गया आपको. I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. एंड लास्ट वी विल राइट हैंड्स रूल. ओके, लास्ट वी विल राइट हैंड्स रूल. सो कंप्लीट दिस फास्ट. एनी डाउट प्लीज आस्क मी. यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है, ये जो बॉक्स में लिखा है ना मैंने, इसमें डाउट रहता है ज्यादातर. तो अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लो. सब समझ में आया है तो लिख लो, फटाफट करो. लेक्चर का टाइम 2 मिनट बाकी रह गया. 2 मिनट में आप लिख सकते हो, खत्म कर सकते हो, खत्म कर लो. So there is no doubt. आशीष, कुछ डाउट नहीं है आपको? अजिल, कुछ डाउट है आपको? हार्दिक शिंदे, हाँ सर. कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ सर. अरे वो माइक आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया था, क्या बात है? हो रहा ही नहीं है, वो इधर नेट का इशू बार बार ये हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से हो रहा है. और बाकी सब ठीक है? हाँ सर. चलो चलो, बढ़िया. कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए. हाँ सर. So time is up. Those who want to leave, they can take a screenshot and leave. Those who want to write, they can continue writing. जिनका हो गया वो जा सकते हैं. Thank you so much for paying attention. Have a nice day. Goodbye. Bye, sir.
Bye, sir. Sir. Bye, Harsh. Bye. Bye, sir. Bye, bye, bye. Yes, Abhijit, Avishka, Ridanshu, Snehash, are you writing? स्नेहश आप लिख रहे हो? रिदांशु लिख रहे हो आप? अविष्का और अभिजीत? So I am ending this lecture. Okay. Thank you so much.